Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Tari Ekam School Systems Gujarat region. Hope you all are fine and are very good at your health. First of all, we will start with the dua. So, Rabbi Zidni Ilma, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. So, this is your history lecture, and what we are going to discuss in today's history. So, is in today's history? Today, we are going to discuss about the remaining two roundtable conferences. There is second roundtable conference of September 1931 and the third roundtable conference that is from 1931 to 1932 November. So the roundtable conferences. In the previous lectures, we have discussed about the roundtable conferences, in which the first roundtable conference was failed due to the absence of Indian National Congress. So the committee could not decide anything about the future of the subcontinent, because Congress is a major part of the subcontinent and a very largest representative party in the subcontinent, and in the absence of this party, no decision could be made. So in the second roundtable conference was held on September 1931. When the Indian representatives returned from the first roundtable conference, they urged Gandhi to stop this non-cooperation and agree to attend the next set of talks in February 1931. Second Roundtable Conference held in the September 1931 to January 1932 in London. Congress attended this conference. Iqbal, Sir Agha Khan Jinnah were representatives of Muslims. Gandhi was alone to represent the Congress and claimed to be a sole spokesman of Indians, and was not ready to accommodate the other minorities of India. Gandhi met the viceroys of London in the first series of the meeting to agree the terms of the future progress. Some British politicians, especially Winston Churchill, objected to Darwin holding talks with someone who had just been imprisoned to the opposition to the British rule. Delegates did not reach on any agreement, and the conference ended with the refused to recognize the scheduled caste as a Hindu community separate from the Muslim ones. The British government declared communal award in 1932, in which separate electorates were ensured. Muslim rights were protected in this award, but still Muslims' expectations were not fulfilled. So on March 5, 1931, the Gandhi-Lavin Pact was signed. Lavin agreed to release most political prisoners and return property seized by the government. Gandhi agreed to call of a non-cooperation campaign and attended the next roundtable conference talk. He also agreed to give up his demands for the full independence in return of his promise that in a federal India, India would have a genuine say in how they were governed. The second roundtable conference took place in London. We know that and already discussed about it. Gandhi took hard line in the talks and refused the recognized problems of the minorities in the subcontinent. So, what was happened actually in the second roundtable conference of September 1931? We know that the people of the subcontinent was suffering so hard with the with the positions of the Britishers and the rule of the Britishers in the subcontinent, and these
conferences was to overcome the control of the people of the subcontinent. Now अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 1931 से लेके 1932 तक जो है वो लंदन में चलती रही। हम लोग ये जानते हैं कि ये एक नेगोशिएशन सेशन था जिसको हम ADR भी कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जिसके थ्रू जो है वो आपके डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। अब ये कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के साथ साथ जो है वो सर आगा खान और इकबाल और जिन्ना जो है वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक़्त लंदन की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एंड द गांधी वॉज अलोन, और गांधी सिर्फ वहाँ पर अकेला था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को और इंडियंस को जो है बेसिकली हिंदुओं को जो है वो उस वक़्त रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि डेलीगेट्स डिड नॉट रीच ऑन एनी एग्रीमेंट। अब ये जो डेलीगेट्स थे, जितने भी लोग उस टाइम पर जो शामिल थे उन कॉन्फ्रेंसेस में, वो किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच सके थे कि किस तरह से जो है वो इसको शेड्यूलाइज किया जाए और किस तरह से जो है वो कास्ट और कम्युनिटी को जो है वो सेपरेट किया जाए हिंदुओं से। इसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो कम्युनल अवार्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिए 1932 में, जिसने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो इंश्योर कर दिया कि अब जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स मुस्लिम्स होंगे, इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियंस होंगे। जबकि हम लोगों ने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट में जो है वो मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कंबाइन इलेक्टोरेट सिस्टम हो। अब ये नहीं होना चाहिए कि लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो खुद चूज़ करें। हमारे पास जो है वो पार्टीज़ होंगी और उनमें जो है वो लोग जो है वो कंट्री के लिए काम करेंगे बजाय इसके कि वो एक सेपरेट नेशन के लिए काम करें। मुस्लिम राइट्स वर प्रोटेक्टेड इन दिस अवार्ड बट स्टिल मुस्लिम्स एक्सपेक्टेशंस वर नॉट फुलफिल्ड। अब इसमें मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उनको किसी हद तक तो प्रोटेक्ट किया गया है, मगर फिर भी जो मुसलमान हैं उनके जो राइट्स हैं उनको जो है वो उस हद तक फुलफ़िल नहीं किया गया। वो जो उनके 14 पॉइंट्स थे जिना के जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस वो हैं, उन पॉइंट्स पर उनको जो है वो उनको सेफ गार्ड अपना मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो उनके पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं किए गए हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज़ इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? चौधरी रहमत अली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ और नेवर इन विच ही कॉल्ड फॉर अ फेडरल स्टेट फॉर द मुस्लिम नेम्ड पाकिस्तान। अब उन्होंने कहा कि जो थर्ड आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो चौधरी रहमत अली हैं, इन्होंने जो है वो अब भी और कभी नहीं का जो है वो एक पम्फलेट जो है वो उस टाइम पर जो है वो शाया किया था। अब ये उस पम्फलेट का जो है वो बेसिक पर्पस क्या था, वो लोगों को अवेयर करना था कि वो एक ऐसी स्टेट के लिए इकट्ठे हो जाएं, ऐसी स्टेट के लिए जो है वो इकट्ठे होकर काम करें जिसमें जो है वो मुसलमान एक आज़ाद जो है वो कंट्री में रह सकें, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान जो है वो तजवीज़ किया था। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टूड लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। अब ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसके थोड़े से चांसेस थे कि ये सक्सेसफुल हो जाती। लॉर्ड रॉबिन हैड बीन रिप्लेस्ड एज वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड विलिंगटन, who was much less prepared to make concessions. In place of non-cooperation movement restarted, and Wellington responded by having Congress leaders, including Gandhi and Nehru, arrested. In January 1932, Congress formally restarted the non-cooperation campaign. Conference began in November 1932 and ended in December 1932. This conference was for the 1 month. Congress was absent due to the detention or arrestation of the Gandhi Nehru in the January 1932. They were not present in the third roundtable conference. Labour Party also opposed this conference. No result of this conference and ended on a goodwill gesture. अब इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका जो है वो कोई भी जो है वो रिज़ल्ट नहीं निकला है। द इवेंट्स ऑफ 1932 meant that none of the parties involved in the third round table conferences accepted to the achieve anything. Indeed, Congress boycotted to talk and did all the major. Prince Jinnah had gone into the voluntary exile, disillusionized with the lack of progress being made, and was not even invited
did the conference. The Muslims were therefore represented by the Aga Khan, but there were only 46 delegates, and the meeting broke up with nothing and for the substance of agreed. So ये जो आपकी अब आ जाती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है हमारे पास 46 डेलीगेट्स, और इसमें क्या था, इसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में एब्सेंट थे, जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक, सिर्फ जो है वो चंद एक जो शख्सियात थी वो थी, और उसके बाद जो है वो सिर्फ जो है वो सर आगा ख़ान जो है वो मुसलमानों को उस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उस टाइम पर सब कॉन्टिनेंट की जो लोगों के राइट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको की जो है वो एब्सेंस भी देखी जा रही थी। अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो है वो जो लॉर्ड विंटन उस टाइम पे वॉइस रॉय हैं, वो किस तरह से जो है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे और उन्होंने किस तरह से इसके लिए काम किया। अब जनवरी 1932 में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था मोतीलाल नेहरू को और गांधी को। अब इनकी जो अरेस्टेशन थी, जिसकी वजह से जो है वो अपने हिंदू जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदुओं को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपने उस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस भी है वो फेल होती चली गई। डन। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है वो एब्सेंस की वजह से भी एक जो रीज़न है, ये जो है वो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, और इसके बाद जो लेबर पार्टी है उसने भी इस कॉन्फ्रेंस को अपोज़ किया। उसके बाद जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला, और ये कॉन्फ्रेंस भी पहली दो कॉन्फ्रेंसेस की तरह फेल होती गई। ये कॉन्फ्रेंसेस जो है वो 3 लेवल्स पर चलती रही हैं, 1930, 1931 एंड 1932। ये जो 3 साल की कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये एट द एंड इन्होंने कोई भी रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया। ये कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली फ़ेल होती गई, क्योंकि अब ये इतना बड़ा इशू जो है वो टेबल टॉक के थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। So this is all for today. You have to read down both the conferences on your page number 79 and 80 and do AID questions. That is, why did the round table conference fail, and since they failed, it was a waste of time having the conferences. Explain whether you agree with this statement or not. So diary will be shared you in a while, and this is your lecture for today. And you have to search these questions from your red spot book and write it down on your notebook as well, and learn it as well. So till then, stay blessed, stay healthy. Fi amanillah.